So when we are talking about myths, सबसे बड़ा myth क्या है? We have been told that nothing is impossible. We can achieve everything. It may sound as a very motivational statement, but practically, I as a counselor do not believe in it. I believe each one of you is individually different. Your abilities are different. Your capacities are different. So you all have limitations. It is never going to happen that you all will achieve everything. Nothing is impossible is a false statement. I do not agree to that. So everybody has some limitation. You cannot make every person a sports person. You cannot make everyone a musician. You need special skills for that. You cannot make everyone an artist. And you cannot make everyone a doctor or an engineer. That is what we have been doing. And as a result, our society is very, very myopic. We are very short sighted. We do not have a broad vision. दूसरी बात, people say that PCM लेने से बेस बन जाता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ लें, so you are good for everything. Nearly, let me tell you, nearly 50% of our graduates are not employable. उनको जॉब्स मिलती ही नहीं हैं. क्यों नहीं मिलती हैं? Because they are mismatched to the career that they want or career that they have been qualified for. So ये कहना that PCM लेने से बेस बन जाता है, I would rather say कि कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ने से आपका बेस क्रिएट हो सकता है, और रादर कई बार कोई सब्जेक्ट ना पढ़ने से भी you can actually be a great person. Because careers are not limited to only academic careers. Careers are also limited, careers are also available, in fact, based on your interest, based on your hobbies, based on your likings, based on what you do in a day-to-day routine. So whatever work you have been doing, we can create a career out of them. Okay, I am sure ये पीछे तक तो नहीं दिख रहा होगा आपको screen. Are you able to see that till the back? I'll speak it out. So don't worry, you can leave the screen and I can speak it out. So I said अभी PCM लेने से strong base बन जाता है. This is one of the myth that we discussed, and you came to know that any subject is equally good. So it doesn't matter whether you are studying only PCM or PCB or more subjects. So all kind of subjects have equal importance. So do not worry about what you are studying. Maths अच्छा नहीं है तो PCB ले लेते हैं. This is a very normal notion I have seen. Sciences में, please make sure that you have mathematics. मुझे एक बात बताइए, someone who is not strong in maths, can that person ever be strong in physics? अगर किसी का मैथ्स ही अच्छा नहीं है तो फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, एंड बिकॉज फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, you won't be able to crack exams like NEET. जहां 20 लाख लोग एक ही कैटेगरी में सब डॉक्टर बनने चले, या 15 लाख लोग एक ही कैटेगरी में आज भी इंजीनियर्स बनने चले, और इंजीनियर्स में भी फेवरेट चॉइस CS, बाकी कोई मायने नहीं रखती हैं. सो आई ट्राई टू ब्रेक दिस मिथ कि कितना कुछ हो रहा है एंड व्हाट वी आर लूजिंग आउट.
Commerce can be justified without maths. Commerce can be justified without maths. You tell me, 80% of the careers in commerce are all based out of numerical ability. Numerical ability, you should have fun with numbers. In case you cannot have fun with numbers, what are you doing in commerce? Chartered accountancy, chartered financial analyst, right? BCom honors, eco honors, they're all number game. Finance, financial technology, banking, insurance, actuaries, you name a career of commerce and it will not be without maths. Except what? A career that can be done by humanities. You people claim that because we are a commerce student, we can also go with the humanities options. Careers like law, without maths, you can pursue them. But how many of you have serious reading habits? बुक पढ़ना किसको पसंद है आज के टाइम में जब सभी लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं? Okay, very few people have interest in reading books. Reading books means you have your own library, some sort of own library. You pick up a novel, you pick up any kind of diverse book, and you start, reading about them. So those kinds of reading habits, those who are into that, can consider, options which are pro reading like law. और उसके अलावा और भी बहुत सारे करियर्स हैं विच आर बेस्ड आउट ऑफ रीडिंग बट एनीवे एनी स्टूडेंट इन एनी करियर should have reading habits. If you want to grow in life, please understand that if you do not have reading habits, you will not go very far. You will be averaged, you will be a commoner if you do not know, right, what is reading, what do you mean by reading habits. It has to be at least some level that you need to maintain for, knowing what is happening in the world. आप में से कितनी फैमिलीज होंगी घर में जो डाइनिंग टेबल पर कभी ये डिस्कस कर लें कि आज के करंट अफेयर्स क्या है, व्हाट इज द ग्लोबल आउटलुक. ओके, सो सम ऑफ यू मे बी डिस्कस दीज थिंग्स बट हाउ रेगुलर यू आर. इसके बाद कितनी कितनी रेगुलर ये डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज, हाउ डू यू इंट्रोस्पेक्ट. कितने लोग हैं ये इंट्रोस्पेक्ट करने को बोलते हैं पेरेंट्स आपके कि ये सोचो बेटा कि व्हाट वेयर यू आर गुड एट, what you should do, and how truly means how comfortably you have the answer to this question that who you are. What is the possibility that you are not biased toward yourself and you are knowing the correct ability that you have with respect to the aspiration that you have. Aspiration कुछ भी होगा, we will aspire for anything, we will aspire for stars, but ability we do not have. So the right match between ability and your aspiration is what we counselors match, what we counselors do. That is the key role that we play to make you understand what is your true ability with respect to the aspiration that you are going to have. यहाँ कोई biasness नहीं होती. We are upfront, straightforward in telling you who you are. आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे तो भी चलेगा. But that is what is our role, to tell you that this is your ability and this is what you are aspiring. They are two different things. Because हर एक कोई सपना देखता है, I want to be an astrophysicist, I want to be a cosmetologist, I want to be so space researcher, I want to be into this. But when it comes to ability or matching up to the levels, they have no information, no idea about that. So what is the use of that, aspiration where we do not have the ability? Are you getting my point? Everyone sitting there, are you getting this? Humanities has limited scope. ये गलत बात है.
Humanities has a very vast scope. I'll discuss this today. Marks have lost significance. ऐसा नहीं है, मार्क्स की वैल्यू आज भी पूरी है. Why? बिकॉज किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, बाद में आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी. So if you do not have an academic record, please do not come to me and say that I want to study abroad. So first thing to get into a top college is that you need to have a strong academic record. Strong academic record means nothing below 80%. So those who do not score below 80%, right, have some chances of getting into a good school. Otherwise, those who score 90 plus have much better prospects to study abroad. But below 80, sorry, there is no scope to move out of this country and go for some of the finest institutions, because you would be the person who would be exploited the most if you will try to go abroad and end up getting into a poor institution or a wrong institution. There are enough agents sitting in Delhi, those who want such people, जिनके marks कम है, right, and they want them to be sent to abroad. So this is a clear false, thought process. Please do not get into it. You can do a lot of things in India with lesser marks. I can tell you that. That is no problems, right? Similarly, careers are only academic. ऐसा नहीं होता है. Careers academic भी होते हैं and careers non-academic, hobby-based, interest-based, ये भी बहुत सारे careers हैं. So अभी अपन discuss करेंगे कि क्या क्या thought process है हमारे साथ. साइंस बेस्ड करियर्स सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, स्टेम बोलते हैं साइंस को, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स. दीज आर 4 पिलर्स साइंस के स्टूडेंट्स के पास हमेशा होने चाहिए इंटरनेशनली. अगर आप अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कहते हैं, देन यू शुड बी पार्ट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स. ऑलवेज, irrespective of whether you are a bio or a commerce even, yes, or even a PCM student, you should always have these subjects. So engineering में पुराने careers की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में आज के टाइम के अगर हम बात करें जो अपॉर्चुनिटीज हैं, यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में बहुत बात होती है, राइट, वेदर इट इज going to take away our jobs or it is going to take us to the next level. So artificial intelligence will very soon take you to the next level instead of taking away your jobs. So artificial intelligence, cloud computing, right, cyber security, these are all part of computer science. Gaming, right, प्रोडक्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी, जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो टेक्निकल पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. बियॉन्ड दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो एनालिसिस, ये सारे करियर्स, डेटा साइंसेस, ये जितने भी नए करियर्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. So computer science is always going to be an evergreen area, but for those who know how to take command of these technologies, new technologies. पुराना जमाना गया कि आप सोचे केवल पाइथन पढ़ लिया और जावा पढ़ लिया और हो गए हम कंप्यूटर साइंटिस्ट. नो, you need to have hold of strong mathematical skills. पहली चीज जो आपके अंदर चाहिए, that is strong mathematical skills. किसी का मैथ्स एवरेज है तो सबसे पहले जॉब आपकी जाएगी कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज जो एल्गोरिथम्स आपको बनाने होंगे दैट विल बी फॉर मशीन लर्निंग, इट विल नॉट बी फॉर
ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमंस का काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी कर रहा होगा. सो आपके लिए चैलेंज इज दैट यू हैव टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, यू हैव टू रेज योर लेवल, एंड यू विल हैव मच बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, राइट, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग इनटू कंप्यूटर साइंसेस. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांच. मुझे बताएंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट, जितना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, राइट, आप माइक्रो कंट्रोलर्स कह लें, माइक्रो चिप्स कह लें, नैनो टेक्नोलॉजी कह लें, राइट, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पीसीबी डिजाइन कह लें, VLSI कह लें, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जितना भी पार्ट है ये, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. Without electronics and communication, you cannot imagine any development in any technology, right, in the field of engineering. So EC is a, I would say, backbone of any device that you are going to make. ये आपके जितने equipments चल रहे हैं, जितने भी equipments आप देख रहे हैं, that is all because of electronics and communication, right? So we should have good idea about this branch. Then we have mechanical, civil. Mechanical and civil you understand, right? That is working on machinery as well as buildings, infrastructure, right? Mechanical and civil. Medical में पुरानी conventional branches हैं, MBBS, B Pharma, everybody knows, right? लाइफ साइंसेस, ये सबको पता है, बी फार्मा, BDS, MBBS कैसे बनते हैं, राइट. एंड स्टेम बेस्ड जो न्यू एज करियर्स है, जो आज के टाइम के करियर्स है, नंबर 1 करियर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज जीन्स थेरेपी. व्हाट इज जीन्स थेरेपी? जीन्स थेरेपी बताएंगे कोई? Someone who would like to? जीन थेरेपी, आप देख रहे हैं आपके पास इतने सारे डिजीजेस हैं, राइट? यू हैव कैंसर, एड्स, कोविड एंड मेनी मोर. दीज आर स्टिल नॉट क्योरेबल, राइट? सो यू नीड टू डेवलप सच म्यूटेंट्स कि इनका जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए. कितना रिड्यूस हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द म्यूटेंट्स दैट यू क्रिएट व्हाइल वर्किंग ऑन जीन थेरेपी. सो जीन्स के ऊपर स्टडी करना मतलब डिजीजेस के ऊपर स्टडी करना. सो जीन बायोटेक, राइट, बायोटेक्नोलॉजी, जीन्स बायोटेक, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं. सो वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर्स ऑफ करेंट टाइम्स, जिसकी नीड बहुत ज्यादा है. As a scientist, you can work into this area. Then robotics. What is this branch? Robotics is a branch of which engineering? Tell me any one of you. Robotics is a branch of which engineering? Yeah. Quick. I'm not here for a long time. Either you tell you know that or you do not know that. No, it is not part of AIML. No, it is not part of electrical also. When we are talking about robotics, someone who would like to take, this is a branch of? Yeah? No. This is a branch of electronics and communication. रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन. ऑटोमेशन, जहां भी ऑटोमेशन होगा, दैट वर्क मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. बिना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कोई ऑटोमेशन नहीं हो सकता. रोबोट इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ microcontrollers, microchips that are there inside, which you can command and it can work in different areas. So it is all automation. So बिना EC के, बिना
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के this branch cannot exist. So robotics is part of electronics and communication. And आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं. Imagine, this is just because कुछ लोगों ने बोला था कि we read newspapers, we know current affairs. तो ये कहाँ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आप लोग? You have no idea about robotics as a branch. Imagine where we are. And we all are lining up for CS engineers. Right. Ecology. What is ecology? Tell me, what is ecology? It is also a career. It is also a new age career into sciences. We all have eaten up resources of this land. We have destroyed forests. We have destroyed animals. Right? And we need people, those who can create a ecological balance between humans and other स्पीशीज. इसके बारे में स्टडी करना आज की रिक्वायरमेंट है. अगर हम ये नहीं करेंगे, सो दिस अर्थ विल नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, और वी विल स्ट्रगल, बिकॉज वो जो चेन ऑफ फूड है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं. वी आर दी वंस हु आर डिस्ट्रॉइंग दैट. वी आर दी वंस हु आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट. Right? So ecologists are those who can study and balance. So forests, natural resources management is part of ecological balancing. कैसे उसको मैनेज करेंगे natural resources को? You need scientists for that. Right? So this is a strong branch within bio. And even PCM students can pick up this branch. Ecology. Without studying bio, you can still study ecology. Beyond this, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? मेडिकल इलस्ट्रेशंस, आप देख रहे हैं कितनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आर बीइंग जनरेटेड ऑन ह्यूमन बॉडी. वी ऑल वांट टू सी इनसाइड द बॉडी दैट वी हैव, एंड दैट इज ऑल मेडिकल इलस्ट्रेशंस. जितनी डिजीजेज हैं, जितनी फॉर्मेशंस हैं हमारी बॉडी की, वेन्स तक, राइट, वेसल्स तक, राइट, वी कैन हैव अ क्लोज वॉच. And that is all possible because of medical illustrations. So scientists, those who are working on medical technology, they can be illustrators, medical illustrators as well, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. And we only want to become a doctor. Beyond this, photogrammetry. Photogrammetry क्या है? Photogrammetry is a career that talks about engaging with the images sent by satellite. जो सैटेलाइट इमेजिंग होती है उसके ऊपर काम करना इन द इंटरेस्ट ऑफ ओवरऑल अर्थ. सो कैसा आप फोटोग्रामेट्री से बहुत चीजें आप मालूम कर सकते हैं. कितने नेचुरल डिजास्टर्स से बच सकते हैं आप, और यू कैन बी टोल्ड इन एडवांस. And photogrammetry is the study of, doing that satellite imaging. And this is a work that can be done with PCM. If you have maths, you can do this photogrammetry. This is a separate branch. You have astrophysics or astronomy as other branches which are similar to this. This is a more specialized branch. Are you getting this? Then you have pyrotechnic engineers. What do you mean by pyrotechnic engineers? Are you interested in listening to new age careers?
या वही पुराने डिस्कस करें? सो व्हाट इज पायरोटेक्निक इंजीनियर्स? Pyrotechnic engineers, pyro, what do you mean by this? डाइनिंग टेबल पर करियर्स के बारे में डिस्कशन ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि हम मूवीज डिस्कस करें, अगली वेब सीरीज डिस्कस करें, या कहाँ घूमने जाना है वो डिस्कस करें. वी शुड हैव सम टाइम स्पेंट ऑन करियर्स ऑल्सो. पायरोटेक्निक इंजीनियर्स मीन्स जितनी आपने आईपीएल मैचेस देखे हैं, सेलिब्रेशन मोमेंट्स देखे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस देखे हैं, इवेंट्स में सेलिब्रेशंस देखे हैं, वो जो स्काई में रॉकेट्स और जो फायरवर्क्स होते हैं, उनकी जो फॉर्मेशंस होती हैं, द कलर कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मेशंस ऑफ दोज क्रैकर्स दैट आर बर्स्टेड इनटू द स्काई, वो जो लेवल होता है, उसको जो बनाने का तरीका होता है, दैट इज पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग. पीपल हु कैन प्ले विथ केमिकल्स, राइट? सो अगर आपको केमिकल्स के साथ यू कैन प्ले एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट इट, यू कैन बिकम अ पायरोटेक्निक इंजीनियर. Right? Amazing scope, amazing scope. कोई किसी तरह की भीड़ नहीं है इसमें. आप 15 लाख लोगों की लाइन में लगते हो, यहां शायद आपको पूरे कंट्री में शायद 15 लोग नहीं मिलेंगे आपको जो पायरोटेक्निक इंजीनियर्स हैं. फॉरेंसिक्स क्रिमिनल एविडेंस कलेक्ट करना. साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, और भी क्राइम्स सोसाइटी में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से क्राइम्स आर ऑन एन इंक्रीज. सो व्हेन क्राइम्स आर ऑन एन इंक्रीज, वी नीड स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्टर्स, एंड फॉर दैट देयर इज अ साइंस कॉल्ड फॉरेंसिक्स. पीपल with science background, PCM or PCB, irrespective of that, can pick up bachelors in forensic sciences. A very strong branch. And किसी के पास PCB के साथ psychology भी है, so there is one more branch into it, forensic psychology. Amazing career that you can get into right through forensics if you have interest into collecting, criminal evidence निकालना है, you can work like that. Sound engineering, we all love music. अभी यहाँ कोई शो हो रहा हो म्यूजिक का, यू ऑल वुड बी जंपिंग, राइट? एंड दैट इज ऑल अ वर्क ऑफ साउंड इंजीनियर. कितने लोग हैं हमारे में से यहां पर जो साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं, बीटेक इन साउंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन साउंड इंजीनियरिंग, अमेजिंग स्कोप. एंड बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, हम लोग साउंड इंजीनियरिंग को करियर ही नहीं सोच रहे हैं. हमारे पूरे शहर में शायद एक भी साउंड इंजीनियर नहीं होगा, एक भी नहीं होगा. एंड दोज हु आर somehow not from science background, still you want to be into this area, sound engineering जैसा एरिया चाहते हैं आप, you can do bachelor's in music production and sound design, bachelor's in music production and sound design. You will have opportunity to work with the best stalwarts of industry, right? Into some of the finest universities. I can recommend you to do this course and come out very well skilled person and become, talk of the town.
वाई? बिकॉज यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। आपके बारे में बात तब होगी जब आप कुछ अलग कर रहे हैं, राइट? अगर एक कॉमन काम कर रहे हैं तो आपको कोई जानता नहीं है, आपके जैसे हजारों हैं। और आपके जैसे हजारों इसलिए क्योंकि आपने उन हजारों को देख के अपने लिए चुना है, अपने आप को सोच के नहीं सोचा। कितने लोग हैं म्यूजिक पसंद करते हैं? वाह! कितने लोग हैं जिनको कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है म्यूजिक का? कितने कम हैं, राइट? बोथ माय hello, yeah, both my children, right? My son, he is a classical pianist, western musician. He is currently working. And my daughter is a vocalist. She is a Hindustani vocalist. She's a singer. You can find them. You can find them on Instagram. My daughter is Angel Jain, musician, and my son is Samyak Jain. या सम्यक म्यूजिशियन, सम्यक.live, सम्यक.live के नाम से शायद उनकी आईडी है. You will see them and you will see that how they have grown in the last 15 years, 10-15 years. उनका एक्सपीरियंस इस समय 10 से 15 साल का है, but they are of your age. They are 21, 23, 24 years. That's it. But they have played music since they were very small, and they continue doing that and build a career into it. They did bachelor's in Western music piano. Another did bachelor's in performing arts. Why? Because we never wanted to be a commoner. We wanted to be who we are. मेरे दिन का टाइम सबसे ज्यादा जहां जाता है, मुझे वो बनना है. मेरा स्किल क्या है? मुझे वो करना है जो मेरा दिल कहता है और वो जिसमें मैं ऑलरेडी स्किल्ड हूं. आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या इसमें पूछो. सर, आई वांट टू से कि आपने कहा कि जो हम बनना चाहते हैं हम वो बने, लेकिन काफ़ी सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनका खुद का मन कुछ और बनने का होता है, बट पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर के चक्कर में वो अपना करियर जो वो चाहते हैं वो परस्यू नहीं कर पाते. शी इज एब्सोल्युटली राइट. बहुत सारे लोग हैं जिनका मन होता है कि हम वही करें जो हम बनना चाहते हैं, राइट? उसमें भी क्रॉस चेक होता है कि एबिलिटी और एस्पिरेशन में फर्क तो नहीं है. पहला काम तो किसी भी स्टेप पर आपको आगे बढ़ना है, यू शुड हैव वन इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग फॉर सर्टेन, फॉर श्योर, ईच वन ऑफ यू. अगर ये नहीं है तो ये क्लैरिटी नहीं कभी पता चलेगी कि आप एक्चुअली सही भी हैं या नहीं. और अगर आप सही हैं, यू आर राइट, देन there should not be any power in this world that should stop you from becoming what you want. अगर आप सही हैं, आपकी एबिलिटी अगर बिल्कुल मेजर्ड, बिल्कुल सही है, we have the power of talking to society, we have the power of talking to your parents, we have the power of talking to your teachers, anyone, and we have the power of talking to you, right? So we know that what is the power of correct advice और दी काउंसलिंग सेशंस. ये आज जो आपको मिल रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ काउंसलिंग सेशन. नहीं तो आप यू वुड हैव बीन ऑल इनटू द सेम बोट डूइंग द सेम थिंग, एंड आज भी मेरे जाने के बाद भी यू विल बी इनटू द सेम बोट, क्योंकि आप लोग एक्ट नहीं करते हो. सुनना अच्छा लगता है, बट एक्शन, वेयर इज दैट एक्शन? Are you getting my point? Right? So somehow sound engineering के अलावा crypto analysis. What is crypto analysis? Very, very strong career of current times. Very strong career of current times. Crypto analysis. बताएगा कोई? Any guesses? हाँ जी.
investing in cryptocurrencies No, it is not that. and like No. graphical analysis? No. It is different. Sir, cryptocurrency analysis, No. It is not cryptocurrency. It is cryptologist. so stock market data analyst kind of career. No. So it is not that as well. What you are telling is data scientist or a cryptocurrency expert or no. Crypto analytics is a field where you have listened about hackers, right? So जो हैकिंग करते हैं, हैकिंग से बचाने के लिए यू हैव बेटर मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैकर्स के मॉडल्स को भी क्रैक कर सके. दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो एनालिसिस. And this is a field of engineering. Cryptologist. You need to be very fine mathematician, very fine with your maths. Self natural ability, जिसे कहते हैं ना कि खुद की एबिलिटी बिल्कुल नेचुरल, नथिंग मेड, कुछ सिखाया नहीं गया आपको, फिर भी यू आर एक्सपर्ट इनटू मैथ्स. दैट काइंड ऑफ ब्रेन, right, if you have, you can become a crypto analyst. Very strong career. Beyond that, you have food sciences. Food science में food technology, food processing, right, food and nutrition, health care, ये सब कुछ food sciences में आ जाता है. So अगर technical side में जाना है, you can be a B.Tech into food technology. And अगर bio side में जाना है, you can be a nutritionist or a microbiologist. इसमें और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट, एग्रीकल्चर साइंसेस, ये सारे फील्ड्स क्या है, बायो बेस्ड है. विदाउट मैथ्स यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट. बट क्लिनिकल रिसर्च पे अगर जाना होगा, क्लिनिकल रिसर्च रिक्वायर्स मैथ्स, चाहे आपके पास बायो ही क्यों ना हो. And as I told, internationally, if you are a science student, you cannot apply to becoming a doctor internationally. Why? Because you do not have maths. आप इंटरनेशनल स्टडीज में डॉक्टर बनने के लिए किसी इंटरनेशनल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना हो, यू नीड मैथ्स. ये केवल हमारे कंट्री में चलता है कि मैथ्स अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, पीसीबी ले लो एंड वो कोचिंग्स में जाके लाइन लगा लो लंबी लंबी, राइट, कुछ नहीं होगा आपका. एक्सेप्ट वो लोग जिनकी नेचुरल एबिलिटी है. दोज हु हैव नेचुरल एबिलिटी वो कर लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेचुरल एबिलिटी चाहिए. There is one more branch साइंस में. अगर if we add arts into science and arts का कॉम्बिनेशन, स्टेम बोल रहा था ना मैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स. Add arts into science. If you have the ability to design, if you have the ability to sketch, and you are a science student also, you have careers like mechanical careers are based on drawings. Civil engineer is based on drawing, right? Architecture based on drawings, right? You need to have your sketching ability along with being PCM student, right? अभी recently architecture के लिए किसी के पास केमिस्ट्री ना भी हो और फिजिक्स और मैथ्स हो, दैट इज अलाउड. फिजिक्स मैथ्स अगर है, केमिस्ट्री नहीं भी है, यू आर अलाउड टू टेक अप आर्किटेक्चर एज अ फील्ड if you have strong sketching ability, designing ability. Then of course you have
वेबसाइट डिजाइनिंग, मॉडर्न अर्बन प्लानिंग, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, वो जो इनसाइड जो स्केचेस बनाते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट, वो बिल्कुल सही स्केच होना चाहिए तभी वो उसको क्योर कर पाते हैं सर्जरी में। सो ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है टू स्केच। बायोमेडिकल इंजीनियर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर्स बिकॉज दे विल ऑलवेज नीड स्केचिंग एबिलिटी। जहां बायो है तो आप समझते हैं कितने डायग्राम्स आपने बनाए होंगे बायो में, राइट। प्रोडक्ट डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर कोई भी प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी, कार से लेकर के आपके सिंपल पेन्स और हेयर पिन्स तक, you can create those things, you can make those things, innovative products, new products. Product designer, amazing field for someone who has arts and would love to be a product designer. Then you have animation, सब जानते हैं एनिमेशन के बारे में, right? Then you have forensic psychology, I already told. Coming to commerce based careers, as I said, commerce में जितने भी careers हैं, most of them require maths. तो मैथ्स बेस्ड कॉमर्स करियर्स क्या हो सकते हैं? बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करियर। बैंकिंग में देयर इज अ ह्यूज क्राउड, बट इतने लंबे क्राउड में आप, कैन यू बिलीव, बैंकिंग में एवरीबडी कैन नॉट एंटर, you need very strong maths for that. Finance, again you need strong mathematics. इसीलिए यहां पर IITians भी कॉम्पीट करने आपके साथ आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में। जिनको बीटेक करने के बाद समझ में नहीं आता व्हाट टू डू, दे डू बैंकिंग एंड फाइनेंस। व्हाई? बिकॉज दे आर गुड इन मैथ्स आल्सो। एंड एक्चुअरीज इज रिस्क मैनेजमेंट। जितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो क्या प्रीमियम रखें सो दैट रिस्क कैन बी एश्योर्ड, उसको कैलकुलेट करना, रिस्क मैनेज करना, उसके पूरे मैथमेटिकल मॉडल्स क्रिएट करना, बिजनेस मॉडल्स बनाना इज द वर्क ऑफ एक्चुअरियल साइंटिस्ट। इट्स अ वेरी टफ जॉब, राइट, बट हाईली पेइंग, हाईली पेड करियर। मीन्स एवरेज पैकेज हियर इज अराउंड 30 to 40 lakhs per year. So that is the beauty of commerce in case you have maths along. You have fintech, financial technology. कैसे wealth grow होती है? With the help of financial instruments, technical instruments. Right? Beyond that, business analysis, corporate law, chartered financial analysts, CA, CS. ये जितने भी careers हैं, यहां CS को छोड़ दीजिए और थोड़ा लॉ को हटा दीजिए, एवरी करियर इज मैथ्स बेस्ड, सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड। कॉर्पोरेट लॉ में भी अगर टैक्सेशन साइड में आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, कॉमर्शियल लॉज में, मर्जर्स में, एक्विजिशंस में, टेक ओवर्स में, यू वांट टू स्पेशलाइज, यू नीड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन विद मैथ्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लॉयर। मेरा हाथ टेढ़ा हो गया। हेलो, या दिस इज गुड, बेटर। सो नेक्स्ट, so besides that you have bio based new age careers, agri-tech, medical technology, right? ये technical careers हैं for bio. If you don't want to become a doctor, you have these careers, right? एग्रीटेक में क्या होता है? जितने फार्मिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना इज द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नीशियंस। देन मेडिकल टेक्नीशियंस, आई डोंट नीड टू टेल यू कि कितनी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हैं या रोबोटिक्स बेस्ड हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उनको बनाने का काम इज द वर्क ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर्स, राइट? मेडिटेक, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, हॉट टॉपिक्स फॉर डूइंग स्टार्टअप्स।
एक भी करियर आप इसमें पिक कर लीजिए, सारे स्टार्टअप्स वाले करियर है। यू कैन बिकम अ मल्टी मिलियनर अगर आपको ये टेक्नोलॉजीज पे काम करना आ जाए। अगर आप केवल डॉक्टर बनने की रट ना लगाएं और सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाना शुरू कर दें, यू कैनॉट इमेजिन द काइंड ऑफ रेवेन्यू दैट यू विल जनरेट। फार्मिंग इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दे, फार्मिंग इक्विपमेंट, सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, सस्टेनेबिलिटी, राइट। ये बहुत बड़े करियर्स हैं, बिग करियर्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, ज्योग्राफर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होती है? समवन विद अ बायो एंड विदाउट मैथ्स you can still do BTech in computational biology. Ideally, I would like someone with maths. But अगर maths सीखी नहीं है, आप कॉलेज में जाके वो आपको maths सिखा देंगे to become a computational biologist. बट ये इस फील्ड का अमेजिंग स्कोप है, क्योंकि बायोलॉजी बेस्ड इतना डेटा है प्रोसेस करने के लिए जिसके ऊपर अभी तक काम ही नहीं हुआ है हमारे कंट्री में। उसके ऊपर अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट लगे हैं काम करने के लिए। एंड यू कैन इमेजिन, जैसे डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं ऐसे ही कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट काम करते हैं। 10:30 बस 15 मिनट में आई विल वाइंड अप। ओके, ह्यूमैनिटीज बेस्ड करियर्स, कैन यू इमेजिन, कोई लिमिट नहीं है इसकी, देयर इज नो लिमिट। पहली बात तो एकेडमिक करियर्स, आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए ह्यूमैनिटीज का, यू हैव अ एंटायर वर्टिकल करियर इनटू दैट। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में हेरिटेज मैनेजमेंट है, हिस्ट्री के अंदर क्यूरेटरशिप है, राइट, और बहुत एडवांस्ड करियर्स है हिस्ट्री में ही। साइकोलॉजी में एंडलेस करियर्स, you want to be occupational psychologist, you want to be forensic psychologist, you want to be a child psychologist, you would like to be a counseling psychologist. I am not a counseling psychologist, by the way, I am a career counselor, right? So there is always a difference between people, those who come and talk to you. So psychologists or psychology counselors are those who deal with mental issues. I am a person who give little more mental issues to people, will give you more pressure to think about new things. I don't know whether you get relieved or you get added with your pressure. So that's my profession. I have to work like that. You have fine arts and design. मुझे दो चीजें पसंद है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स में, एक तो उनकी रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने की आदत। अगर ये नहीं है, ह्यूमैनिटीज क्यों लेके बैठे हो आप लोग? कुछ नहीं होगा आप लोगों से ह्यूमैनिटीज में अगर आप रीडिंग हैबिट्स आपकी निल है। बहुत लोगों को पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं है, तो फिर ऐसे करियर्स की बात करते हैं जहां पढ़ाई ना हो। चलो ठीक है, फाइन आर्ट्स, ये सारे वही करियर्स हैं जहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी एंड यू वुड एंजॉय। क्या करियर्स है ये? फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन, यहां जो भी पढ़ाई होगी वो डिजाइन से रिलेटेड होगी। बट वर्क कल्चर क्या होता है? वर्क कल्चर इज लाइक, एक कॉलेज, अगर अच्छे कॉलेज में आप पहुंच जाते हो, सो यू स्पेंड 18 आवर्स वर्किंग, 18 घंटे आप काम करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, राइट? इट इज दैट काइंड ऑफ करियर। सो डिजाइन में you become a fashion designer, you become an aesthetics designer, you become a furniture designer, you become an interior designer, product designer, user interface, user experience designer, graphic designer, right? Space designer, visual merchandiser. Visual merchandiser कौन होता है? जितने भी आप ये शॉपर स्टॉप्स पर जाते हैं, वो जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले इज द वर्क ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजर। डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स,
डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स इज द वर्क ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजर. कहां पर क्या अच्छा लगेगा, दैट पर्सन नोज बेटर, राइट? एंड इट इज अ करियर, हाईली पेड करियर. culinary arts, art of food, फूड मेकिंग, ये हमेशा एवरग्रीन फील्ड है और इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यू कैन बिकम ओवरनाइट सेलिब्रिटी. रातों रात आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो अगर कमांड है culinary आर्ट्स पे, फूड के ऊपर कमांड है, यू कैन बिकम. एंड आई एम श्योर यहां ऐसे कुछ तो जरूर होंगे जिनमें ये क्वालिटी है, राइट? लेकिन इसकी बात नहीं करते. इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करियर, पे वाइज भी और फ्यूचर के हिसाब से भी, कभी एंड नहीं होगा. उसके अलावा ट्रैवल टूरिज्म, घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है? वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑफ आवर कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड इज ट्रैवल एंड टूरिज्म. हम सबको वेकेशंस पे जाना अच्छा लगता है, राइट? कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी कहीं और करना अच्छा लगता है वेकेशंस पर. आजकल तो ट्रेंड है वेडिंग भी. क्या बात है, सबने सोच रखा है डेस्टिनेशन ही होना है भाई. ग्रेट. पेरेंट्स से तो पूछ लो एक बार. चलो ठीक है. अच्छा, बाय द वे आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम आस्किंग यू. पढ़ाई क्यों कर रहे हो? यू विल हैव अ बेटर मैरिज, यू विल हैव अ बेटर मैच, राइट? पढ़ाई बहुत रीजन, हमारे पेरेंट्स के बहुत बड़े सॉलिड रीजन होते हैं. पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए, आपको डॉक्टर इसलिए बनना है, इंजीनियर इसलिए बनना है, बिकॉज वी वांट टू गेट यू मैरिड इनटू अ गुड प्लेस. ये नहीं पता भाई दूसरा बंदा भी इंजीनियर ही है, वो भी डॉक्टर ही है, वो भी बेचारा उसी ट्रैक से निकल के जा रहा है. टफ है. तो पढ़ाई केवल शादी के लिए करनी है क्या? यस सर. अच्छा, अब सुनाई पड़ गया मुझे, ठीक है. नाउ आई एम एट द राइट प्लेस. आई थॉट आई एम एट द रॉन्ग प्लेस अदरवाइज. राइट, बट मैरिज इज नॉट द ओनली डेस्टिनेशन, राइट? वी हैव सो मेनी थिंग्स टू अचीव इन आवर लाइफ, राइट? एक अच्छा समय बिताइए अपनी करियर के ऊपर. मैरिज होती रहेंगी, इट विल टेक टाइम, राइट? गिव टाइम टू योर सेल्फ, राइट? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को जल्दी पेरेंट्स से मिलवाते हैं पहले. मैंने लगभग आपके साथ 50-60 करियर्स डिस्कस करे हैं अभी, राइट? एंड दैट इज जस्ट अ फ्रैक्शन, 1% ऑफ व्हाट आई नो. There are 6,500 careers that we talk about. 6,500 careers, right? And we are only aware about 10 to 12 careers. So imagine why this happens. This happens because of the prime reason for this non-awareness is lack of career counseling. Lack of career counseling, not at the level of general counseling, but individual counseling. We do not have enough individual counselings. लोग सोचते हैं करियर ही तो है, खिचड़ी तो है, बन जाएगी, खुद ही बना लेंगे. बट करियर इज अ स्पेशलिस्ट जॉब. जैसे आप डॉक्टर को ढूंढते हैं फॉर अ प्रॉब्लम, यू शुड सी अ करियर काउंसलर, राइट? For finding the right match for you in terms of getting the best, career ahead for the next 40 years, not for next 3 years. हमारी जो thought process है वो अगले 40 साल जाएगी. It will not be for just 3 to 4 years. Are you getting? So we have the ability to see that far. We will not see for next 2 years में क्या होगा, पहला पैकेज क्या लगेगा मेरा. ये रबिश है बातें सब. 40 साल के करियर में डू आई नीड टू बॉदर अबाउट मेरा पहला सैलरी पैकेज क्या होगा? मोस्ट ऑफ द ब्रेन्स इन इंडिया आर स्लेव्स.
हम लोग अपनी सारी ड्रीम्स कंपनीज को बेच देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क लेते हैं, खुद ही काम करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़े सैलरी पैकेज में तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। अगले 40 साल में तो किसी की सुननी नहीं पड़ेगी आपको। सैलरी में कहां तक चले जाओगे? लाइफ टाइम में 1 करोड़ की सैलरी ले लोगे, बस ड्रीम्स यहीं तक है, फिनिश्ड। कोई हमें कह दे कि 1 करोड़ दो ना, फिनिश्ड, वहीं खत्म। या वी शुड एक्चुअली गो फॉर हायर एस्पिरेशंस। अपने काम के ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस है एंड आपका काम ऐसा है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है, राइट, you have the power to change the lives of people, then surely you are going to win someday. And ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपके लिए बहुत सारे करियर्स होते हैं एंड यू नीड टू डिस्कवर योरसेल्फ। हम लोग कुछ इन टॉप कॉलेजेस, जितने भी करियर्स मैंने बताए हैं उनके लिए कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं एंड उन कॉलेजेस के लिए वी प्रिपेयर यू, राइट, दैट इज आवर फर्स्ट थिंग दैट वी डिलीवर टू यू। आपको अगर प्रिपेयर करना है टू गेट इनटू न्यू एज करियर्स, देन ओनली कम टू अस। पुराने करियर्स लेके मेरे पास मत आइएगा। न्यू एज करियर्स में जिसका मन है कुछ अलग करने का, देन कम टू मी, वी विल प्लान एंड वी विल टेक यू टू दैट प्लेस। I'll come to you. We also assist you in admissions abroad. इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए भी असिस्ट यू। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्स लाइक IIM इंदौर, राइट, या फिर सिम्बॉयसिस या क्राइस्ट या अशोका या फ्लेम या क्रिया, कुछ टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन जहां पर ये न्यू एज कोर्सेज अवेलेबल है, वो कॉलेजेस के लिए वी मेक यू प्रिपेयर। एंड इवन इंटरनेशनल में सैट के लिए प्रिपेयर कराते हैं आपको, और एडमिशंस कंसल्टिंग में कैसे आपको एप्लीकेशंस प्रोसेस करनी होती हैं इंटरनेशनली और नेशनली, दोनों के लिए वी हेल्प यू। वी हैड सम अमेजिंग सक्सेस, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट वी डिड हैड, मींस वी हैव ऑलमोस्ट, यू नेम अ कॉलेज, you will find our students studying into all those new age colleges that we are talking about. सोशल मीडिया पर आज का जो पूरा ये सेशन है, यू विल फाइंड इट ऑन सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब। ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप लोग आराम से इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व एंड शो इट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। आई एम श्योर आप लोग इसको दोबारा अच्छे से सुनेंगे एंड रिसर्च करेंगे। रिसर्च करके जो क्वेश्चंस होंगे, आप अपने क्वेश्चंस लेके कभी ना कभी, whenever you get time, you can come to me. And if possible, come for an individual counseling session with your parents. आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत होती है, that I know much better. So I spent 25 years in career counseling and I know the pulse of, the society, what they think, how they think. So we have the ability to understand and cure those problems, which is a big issue in terms of choosing the right careers for you.